मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज हर किसी के लिए ये है कि मेंटल हेल्थ किसी एक स्पेसिफिक तरीके के लोगों का इशू नहीं है। ये उन लोगों का इशू नहीं है जिनको डिप्रेशन है। उन लोगों की तो मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई है तो वो डिप्रेशन में है। अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें जिससे लोग जब अकेले होते हैं या लोग जब परेशान होते हैं, जब ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ता है, उनको उस समय पर सही तरीके के टूल्स मिल जाएं, तो शायद नंबर ऑफ पीपल जो आज डिप्रेशन में जाते हैं, शायद हम उससे कम लोगों को डिप्रेशन में भेज के कुछ लोगों को उस साइकिल से, उस प्रोसेस से बाहर निकाल पाएं। सोल वेलनेस का मिशन उन लोगों को इस साइकिल से बाहर निकालना है। मेरा नाम है कपिल गुप्ता, मैं को फाउंडर हूँ सोल वेलनेस एप्लीकेशन का। हम एक मेंटल वेलनेस के लिए एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जो एक मार्केट प्लेस की तरह है। ईजी समझने के लिए आप ये समझिए, हम एक जोमेटो चला रहे हैं मेंटल वेलनेस के लिए, जहाँ हर कोई जाके अपने लिए सही तरीके का सपोर्ट, सही तरीके की हेल्प ले सकता है अपनी मेंटल हेल्थ के हिसाब से। उसके अलावा हम उस एप्लीकेशन के अंदर एक जर्नलिंग का कैपेबिलिटी देते हैं। वो जर्नलिंग का कैपेबिलिटी कुछ तरह से ऐसा होगा जैसा इंस्टाग्राम होता है, मगर फ़र्क ये होगा, इंस्टाग्राम पे लोग वो फूड बोलते हैं, वो खाना बोलते हैं जो कभी खाते नहीं हैं, लोग वो ट्रैवल बोलते हैं जो कभी जाते नहीं हैं, लोग वो लाइफ बताते हैं जो वो कभी जीते नहीं हैं। यहाँ पर क्योंकि ये कमिटेड मेंटल हेल्थ स्पेस है, यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशंस होंगी, यहाँ पर जो लोग बोलेंगे, जो लोग शेयर करेंगे, जो सोल्यूशंस मिलेंगे वो रियल लाइफ सोल्यूशंस होंगे। किस तरह से, मतलब थोड़ा सा हमें समझाइए कि मेंटल हेल्थ के किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आज की दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस है। अब पहले वाला सिचुएशन नहीं रहा कि कुछ लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और बाकी लोग हैं जो नॉर्मल हैं। हर किसी की ज़िंदगी में एक्स्ट्रा स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को डील करने के लिए लोगों को टूल्स चाहिए होते हैं, लोगों को सोल्यूशन चाहिए होते हैं, लोगों को आसपास में लोग चाहिए होते हैं जिनसे वो बात कर सकें। सोल वेलनेस एप्लीकेशन से हमारा पर्पस है लोगों को वो टूल्स दे पाए, लोगों को वो सोल्यूशंस दे पाएँ, लोगों को कुछ दे पाएँ जिससे वो बात कर सकें, जिससे वो काउंसलिंग ले सकें, जिससे वो थेरेपी ले सकें, जहाँ पर वो जाके उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और दूसरों की ज़िंदगी से इंस्पायर होके या दूसरों की ज़िंदगी से सिर्फ ये देख के कि अच्छा उसकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, मे बी मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ से लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल वेलनेस के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म पहले से शुरू है या ये आज स्टार्ट हुआ है? ये प्लेटफॉर्म 1 महीना पहले लॉन्च हुआ था। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? हमारी एप्लीकेशन के इस समय पर तकरीबन 5,500 से 6,000 लोग हैं और सोशल मीडिया पे हमारे पास में तकरीबन अनदर 12 से 15,000। और बाकी लोग आपसे जुड़ने के लिए क्या करें? सबसे अच्छा तरीका है हमसे जुड़ने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन या iOS फ़ोन, आपके पास एप्पल का फ़ोन है या एंड्रॉयड है, आप जाइए और आप प्ले स्टोर से जाके सोल वेलनेस एप्लीकेशन सर्च करिए। सोल के नाम से सर्च करेंगे, SOLH आप सर्च करेंगे, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पर हमारे बारे में देखिए। दूसरा तरीका है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे भी सोल वेलनेस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। मगर सबसे अच्छा तरीका, डाउनलोड द एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पे आके हमारे यूज़र बनिए और अपनी मेंटल वेलनेस, और अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है तो दूसरों की मेंटल हेल्थ सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर वॉलंटियर करिए, सपोर्ट करिए, प्रोवाइडर बनिए। हमारे दर्शकों को और आप क्या कहना चाहेंगे? सो धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों से बात करने। I think people sitting here will be able to share their experiences also, at least the married ones. हम शादीशुदा जिंदगी की बात कर रहे हैं। किस तरह का बीता आपका लॉकडाउन? Anybody would like to share? बहुत बेहतरीन। कैसे बेहतरीन हुआ, यही तो जानना चाह रहे हैं। ओके, जनाब ने तो बात बिल्कुल शुरुआत पे ही खत्म कर दी कि बहुत बेहतरीन बीता और सामान फैमिली के साथ बहुत अच्छे से समय हम बिता पाए। बट वाज इट एक्चुअली सो इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू डू दैट? हमें आदत थी अपनों के साथ रहने की 24/7। As a psychologist, I visit couple of places where I meet children as young as 4 and as old as 70. तो स्पेक्ट्रम इतना बड़ा रहता है, 70 से ज़्यादा के भी कुछ लोग हो जाते हैं. Different places where I go and in my private capacity when I see clients. यंगस्टर्स की बात करूं, आप में से कुछ लोग जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, 19
And the thought behind this was, while I was conducting such workshops with some other NGO, a lot of mental health workshops I used to be a part of, and I used to go around across the country, even internationally. We traveled for these workshops, and what happened in one such workshop, we had this couple. Now we wanted all of them to share their experiences. So the wife would not share. The husband came out with his whatever things that he had, whatever feelings he was undergoing, but the wife kept shut. And when I asked her, she came up to us and she said that, if I start talking about my thing, my husband will not give me an easy a day when we go back. The wife did not share her views for the first half of the workshop. Later on, we kind of encouraged everyone to share something or the other, and that is when she started slowly opening up, and she also shared bits. Much later, after the workshop, both of them came to us, and the husband said, I wouldn't have known that she had so many problems or issues, which could have been resolved if I only knew, if only she talked about it. But she hadn't. Now, talking is also an art. How you are conveying your feelings, your thoughts is also important. So, talking is important. How you talk is also important. That became the trigger point of my platform, the Talk It Out Express, which I initiated in 2017 and registered in 2019. I have done several workshops within India, couple of them outside India with HR professionals, leadership workshops, and with youth of Philippines. About 3 to 4 days of workshop. It was a leadership workshop again, where the youth came up with their own issues, and it was quite a success. Now the idea again, as I mentioned, of this platform is to encourage and enhance people's socio-emotional skills and help them lead healthier lives. The pamphlets are already there in your welcome kits, the Talk It Out Express. Please look it up. Okay, I want someone from you I need 2 volunteers, one to read the quote and the other to decode. It's a very simple quote, to kindly deconstruct the quote. 2 of them. And I want the backbenchers, someone from the back. Ladies, boys, girls, anyone, कोई भी आके पढ़ ले, वहीं से पढ़ ले. We all can hear, थोड़ा loud voice में. Just read the quote. Yes, please. Please go on. You want to read? Yes. Let's not forget that the little emotions are the great captains of our lives, and we obey them without realizing it. Yes, very well said that. And this is a quote by Vincent van Gogh, who was an artist, an impressionist, a Dutch artist, who himself suffered from depression. But he turned to art, and he created beautiful art when he was alive, for the period he was alive. Right, again, someone else to decode this, or just to explain, maybe. It's very simple language. Yes, please. Yeah, so I believe it is all about, the emotions or any feelings you feel in everyday life. Yeah. Which lead for you to take some decisions in your life, and which drive anything around you. It could be a family, a decision, your work, or anything else, or all of us coming here. Right, and then we do not realize what it is leading us to do. Yeah. In some way in the subconscious mind, but yeah, everything which is happening in your life currently would lead you to do something in the future. That is True. what I believe. Well explained. Let me just supplement that, whatever he has shared. So it basically means that our emotions are our captains. They lead us to what we are doing. They unconsciously or consciously, whether what do I want to have for my breakfast, to whom do I want to vote. Smallest of the decisions to the biggest ones are guided by our emotions, and we don't even realize what is happening. Now let's understand what is an emotion. The etymology of the word emotion. हम बोलते तो बहुत है emotion, लेकिन emotion होता क्या है और कहाँ से आया है? Emotion came from like all English words, the source is the Latin language. This also comes from emovere. Now, emovere means to move out, or to move through, or in motion. Even dance is an emotion. Taking action. Now, let me give you an example for this.
to describe what an emotion is. You walk into don't look at the slides, but just look here and understand what the example that I'm giving you. You walk into a conference room like that. You are just walking in, you haven't even kind of interacted with anyone or said hello, but as soon as you walk in, looking at the atmosphere, your body will either stiffen up or relax. Right? It happens. हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वहाँ हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली बड़ा ही रिलैक्स्ड होता है, because you know the atmosphere is such. Similarly, when we walk into a conference room, we know this is going to be a serious affair, our body stiffens up. Right? So that action जो आपने लिया या बॉडी ने ऑटोमेटिकली लिया is because of our emotion. Emotions make us act. So from the tiniest to the biggest thing, our emotions are the one who are guiding us. It is the body's defense mechanism for survival. Another example I'll give you is of the snake. क्या होता है reaction? Sorry? डर लगेगा और action क्या होगा? You either run away or you try to kill the snake, right? So that action was because of your emotion of fear. You want to survive. You want to protect your body. So emotion is body's defense mechanism for survival, to protect us. That is inherently built. Right, moving on to the next slide. Now we have talked about emotion, what emotion stands for and how important it is for us. Now coming to the types of emotions. Psychologists have discovered more than 100 kinds of emotions in the world. However, there are 5 primary emotions. कोई बता पाएगा ये 5 primary emotions कहाँ हैं, which are universally felt. आप किसी को भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा he is emotionally whatever in that state. 5 जो emotions हैं वो क्या हैं? Joy, sadness, anger. Yes, you are a psychologist student then. Okay, great. So those are the 5 primary emotions: sadness, happiness, surprise, fear, and disgust. Is it a fear? Or it could be rage. So what are you feeling? Am I just merely annoyed or am I in rage? And accordingly your action will be. Remember I said that emotion guides our actions, right? So action has to be according to the emotion you are feeling, and for that you need to know the kind of emotion you are feeling. You need to give a word to it. Similarly, if we look at joy, is it ecstasy or is it simply serenity? What happens is you are able to detangle more easily your thoughts जो complicated है अंदर. Emotion that at the top of your mind might be anger, लेकिन आपको root cause नहीं पता हुआ anger sprout कहाँ से हुआ. Perhaps the root cause is something totally different. Helplessness. गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं helpless हूँ. तो आपको address गुस्से को नहीं करना है, आपको address actually अपने helplessness को करना है. वो कहाँ से sprout हो रहा है. Okay, so detangling happens. बिल्कुल भी नहीं. आप मेरी तरफ निगाहें मत रखें, कुछ देखने लायक नहीं है. यहाँ निगाहें रखिएगा, यहाँ बहुत बढ़िया देखने लायक है. यहाँ देखिएगा और मुझे सुनिएगा बस. ये स्लाइड सिर्फ मेरी कॉन्वर्सेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, नथिंग मोर देन दैट. But I'm just trying to give you a description and my personal understanding of relationships, keeping in mind the entire canvas of relationship. Relationship is not with living beings. Relationship is with non-living things also. वो कागज की कश्ती, वो आपका छोटा सा बॉक्स जिसमें कितने सारे ट्रिंकलेट्स हैं आपके, and anything you take out, that envelope, that little piece of half read letter, कुछ धुल गया लेकिन वो envelope का कुछ हिस्सा पड़ा है आपके पास. एक छोटा सा हैंकरचीफ जिसमें अभी भी शायद आपके जहन में खुशबू है. You still can feel that smell, and that smell takes you to some time of your life.
So रिश्ते ऐसे भी बनते हैं. And I'd like to introduce Dr. Gitanjali Kumar, and I'll pass the mic to her. Good evening, ladies and gentlemen. Such amazing sessions. Even I lost track of time and the purpose for which I have been invited here. And I just kept wondering, I should be sitting here only, not coming this side and talking, because such beautiful wishes which we made. The talk therapist is trying to tell us to talk, how to talk, and so beautiful, and that's why we all are here. Dr. Veer, I heard him. The rest of the speakers before, I could not. That's my misfortune. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूँ आप लोगों के साथ. मुझसे कहा गया था कि रिश्तों के ताने बाने की बात कीजिए. रिश्ते जो हमारी इमोशनल हेल्थ, जिसका जिक्र सुजाता कर रही थी, मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है. मुझे समझ में नहीं आता कि रिश्ते जरूरी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए है या लाइफ रिश्तों के बिना अधूरी है. और लाइफ है तो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है. सो व्हाट डू? आई रियली डोंट नो. आई थिंक आई हैव टू गो विद माय ओनली मंत्रा इन लाइफ, प्लान फॉर द अनप्लान्ड. क्योंकि जो प्लान है वो लवीना देखेगी, बिकॉज आई विल लूज ट्रैक ऑफ थिंग्स. And the only thing I can just tell you is that you, in your folders, you have one sheet which talks about a relationship bingo. Yes. And we are following a very strict timeline, so I would not like us to, like me to spend a lot of time on this, but just look at it. Something you can relate to within yourself. और अगर over a cup of tea when you do that chit chat, जिसका जिक्र traits which are mentioned in this bingo, सोच के देख लेगा इसमें कुछ common है. Is there some underneath common? That will be the takeaway of myself. I hope the task is not cumbersome. Responses, task cumbersome के नहीं है. वो तो जब बातचीत होगी आपकी, है ना, चाय पे चर्चा कीजिए. चलिए लवीना. So the first question to you is, Alright. adjustment and compromise is the foundation of any Indian marriage. Sad but true. During the lockdown, there were quite a few changes in the lives of married couples. It cannot be denied that the lockdown has brought many couples closer. But since their personal spaces were getting Chawal, butter chicken, what? What do you want to eat? So the mother was doting. मेरा राजकुमार क्या खाएगी, मेरी नन्ही परी क्या खा के मुस्कुराएगी. It was just that kind of a homecoming. But अब